Hello, you guys, welcome back to my channel. I'm Bilkish and I wish you a very great day ahead. The morning is pretty good today and it calls for a morning walk. So, abhi शुरुआत में I'm drinking my water to begin the day, and like I always say, before my day starts, it's Millie's time first. So I'm gonna wipe her face with some tissue paper. I'm going to wipe her legs and her poochie, and then after that I'm going to feed her, ग्रूम हर, एंड उसके बाद होता है मेरा दिन का शुरुआत. So after grooming and feeding Millie, it's time for me to get ready for the walk, and this is what my outfit looks like. Grey on grey, pretty grey, but the day is not that grey. It's pretty colorful, sunny, inviting for a morning walk. But trust me, the outfit looks great, along with the white socks, a cap, and my headphones, and I'll be all set for the walk. T-shirt थोड़ा अनआयरन लग रहा है, but then जाते जाते ये ठीक हो जाएगा. I do not have energy in the morning to iron my t-shirt and go out for a walk. Not happening. So anyway, before heading out, I'm gonna do my little skincare, just moisturizer and sunscreen, a lot of sunscreen. This morning ray of sunshine hits different and makes my skin glow to another level. So now we are headed to the Sarbar Lake. My boyfriend has also joined because he also equally loves morning walk, and we make sure to go together or sometimes just alone. So yeah, we are en route to our park, and there I am, being spotted like a paparazzi by him. Honestly, हम लोग साथ में नहीं चलते हैं, while लाइक वो अलग से वॉक में चलता है, मैं अलग से चलती हूँ. कभी मैं रन में जा रही हूँ, कभी वो रन में जा रहा है, लाइक दिस. सो एंड उसके बाद ही लाइक्स टू डू हिज वॉक. आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन अमंग द नेचर. I love it. And see, this was the view, extraordinary. I love the greenery all around, and the day was so good, so breezy. It was all about getting my morning steps in by walking through nature, good podcast playing, SPF on, and dreaming of my iced coffee and breakfast later. Yeah. So after completing my 10k steps, now it's time for me to get some yoga in, a little more movement, and then I'll go back home. And this is how sweaty I was. Like, I have been just wiping my face.
Okay, so now I'm done with my walk and meditation. It's time to head back home, and it's already sunny, so my cap is on. So after we reach back home, this is what Millie's reaction is like. Her little zoomies with those little tippy toes. Oh my god. I give her a little treat so that she can calm down, and I also do a little tricks with her. Now it's time to make breakfast, एंड मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई, ड्रेस वगैरह नहीं चेंज की. मैं खाना खाने के बाद ही शावर लेने जाऊंगी, बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो विथ मी. तो वो खा के निकल जाएगा ना, तो उसके बाद ही मैं शावर वगैरह लेके सेटल हो जाऊंगी. तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ सो दैट वी कैन हैव अ ब्रेकफास्ट टुगेदर एंड चैट फॉर अ वाइल एंड देन ही विल टेक अप. So I'm making myself some eggs, yogurt and fruit along with some green tea, and for him I have made this egg bun and a butter toast and some fruits. This is what our breakfast looks like, and I'm also gonna steal a little piece of his bun and I'm gonna have it. Not his bun, just the bun, and he's stealing my yogurt and fruits. मतलब पहले जब ऑफर करो तो नहीं खाएगा, और जब नहीं करती हो तो he eats. The simple benefit of waking up early in the morning is you get a lot of time in your hand to manage things on your own with that extra little time in your hand. जैसे कि हम लोग वॉक में जाते हैं, जब टाइम ज़्यादा हाथ में रहता है तो साथ में ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, थोड़ा बहुत सीरीज़ का थोड़ा कुछ पार्ट देख लेते हैं, एंड देन ही गोज़ बैक टू हिज वर्क, आई डू माई वर्क. So anyway, after he left, it's time for me to roam the house and अच्छे से अपना घर रेडी कर देती हूँ before I sit for my work. तो ये सब रूम करने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी. एंड मिली का तो कुछ काम नहीं है, उसका तो सब मैं ऑलरेडी पहले ही कर चुकी हूँ. सो वी ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट. तो अभी ये धोना वोने का काम, एंड आई एम गोना गो टेक शावर. And that's my Millie's little corner to poop and pee, and this is my mirror corner. I'm gonna get ready. So my routine remains same almost every day, but just a thought, we often grumble about our repetitive days, like just same routine: wake up, breakfast, chores, bath, job, sweat out, dinner, bed, repeat, etc. But do we ever pause to see the peace in this consistency and the fruit it brings? How fortunate we are, if every day is the same. It's always better to have a fortunate day than any disaster or nasty surprises. Now I realize there's immense value in enjoying a home life, doing the same tasks daily, laying your head on your pillow at night and wondering what to do tomorrow and making a list. I believe in this cruel world, a boring home life is like winning the lottery. Boring matlab. Anyway, मैं बहुत ज्ञान दे दी already. For the lunch, I am having fish bhaja, mach bhaja with some rice, uche bhaja, and मैं banana आलू का एक कोफ्ता बनाई हूँ, so that curry. It's a beautiful lunch. Yummy. I'm gonna have that, and I'm just gonna go through the meals and see if anything's coming. And after lunch, there I am, slouching and sitting and working. After some time,
थोड़ा बहुत बारिश होने लगा and it was almost evening, so I was craving for something dessert like, so I had mangoes and I'm gonna have this mangoes, and it was sweet and delicious, and I'm enjoying the weather in the meantime. What a day. So done with my today's work and now I'm gonna meal prep my food. अभी मैं burger patty बनाने जा रही हूँ and chapati, and maybe later, further later in the evening we're gonna have a burger tonight. So अभी मैं burger patty बनाऊँगी. For that you need some vegetables of your choice. You can sneak in some vegetables, whoever doesn't like eating certain kind of vegetables in your family. So I did that along with some mushrooms and I have finally chopped all these vegetables. इसको ना पैन में ऐसे ही ड्राई करने के लिए रखा है without any oil, and then I have added some salt, pepper and this chicken bouillon powder, and I'm gonna saute it for some while, and there it is, dried out. थोड़ा सा मॉइस्ट चला जाए तो ही अच्छा होगा टू बाइंड इट टुगेदर विद द मिन्स्ड चिकन. And I had my chicken already marinated last night with some sauces. Sauce में ginger garlic paste था, some vinegar and chili garlic sauce, sweet chili garlic sauce. तो उसी को ही मैं मिन्स कर ली विद जो भी मैरिनेशन के लिए मैं डाली थी, एंड थोड़ा सा उसको कूल डाउन करने देती हूँ. तब तक मैं यहाँ पे चपाती बना लेती हूँ. रोटी कोई भी गोल नहीं बना है, बस ऐसे ही बन गया सब कुछ. थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा जल भी गया है. आई एम अ क्वीन ऑफ मल्टीटास्किंग, बीट हाउस होल्ड वर्क जो भी है, बट कोई मुझे ऐसे ही काम नहीं दे सकता. सो एनीवे, आफ्टर द चपाती वाज डन, मेरा ये वाला भी ठंडा हो गया एंड आई हैव मेड लिटिल बॉल्स आउट ऑफ इट. पैटी बनाना है. आई नो यू कैन फ्लैटन इट आउट स्ट्रेट ऑन द पैन. मैं पहले फ्लैटन नहीं की थी, तो मैं स्ट्रेट पैन में ही ऐसे फ्लैटन कर रही हूँ पैटी को. तो या, वी डू नॉट नीड एनी बाइंडिंग एजेंट फॉर दिस. नो मैदा, नो ब्रेड क्रम्स, नो राइस फ्लावर, नथिंग. इफ़ यू ड्राई आउट ऑल दिस वेजिटेबल्स, उसका मॉइस्चर अगर निकल जाता है तो वो आराम से चिकन के साथ बाइंड हो जाता है. सो and a burger patty always tastes better when it's made of less sauces and ingredients. You guys have to try this recipe and you guys gonna thank me later for sure, because it tastes like McDonald's. Even better, I guess. I'm really not exaggerating here. You definitely have to try. Okay, so he is the full proof. He loved it, and he didn't even get a hint that I've put capsicum and pumpkin that he doesn't like. So after cooking, I was so sweaty. It's time for shower. And done with my shower. It's already late in the evening, so the lights are on. अब मैं थोड़ा धूप अगरबत्ती ये भी जला लेती हूँ. I have a lot of blues in my wardrobe. Before shower also I was wearing blue. Now also I'm wearing blue. But I'm not complaining. I love blue and green. अब बारी है शाम की चाय, जिंजर टी, वही बनाऊंगी. आई हैव माई ओनली गेस्ट, दैट इज़ हैम. सो अभी मैं ये जिंजर टी बनाऊंगी, एंड आई कॉल्ड हिम स्पेशली टुडे सो दैट आई कैन फीड हिम द बर्गर. Yes, I made it before, he loved it, I will make it again. So yep. वैसे ये ब्लू वाले डब्बे में बिस्किट है, वेफर्स नहीं. मिडिल क्लास घर में यही होता है. जो डब्बा जिस चीज़ के लिए होता है उसमें वो चीज़ होता नहीं है, दूसरा चीज़ होता है. तो वेफर के डब्बे में बिस्किट और नमकीन है. यस.
it's time to make some dinner now. Weather is so perfect, day is long, तो थोड़ा बहुत light है. So for the dressing we need some yogurt and this garlic chili sauce which is also a little sweet. So ज़्यादा sweetener का ज़रूरत नहीं है, but if you want you can add a little bit of honey or sugar if you want. And yeah, I'm gonna cut the buns in from the middle and थोड़ा सा उसको टोस्ट करूँगी. तो कुछ तो थोड़ा सा बर्न हो गया है ऑनेस्टली, बर्तन घर में ही तो खाना है. सो या थोड़ा सा इसको टोस्ट करूँगी, उसके बाद मैं असेंबल करूँगी बर्गर्स. Now to a bowl I have added 2 spoons of yogurt along with this sauce I was talking about, and मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ताकि ये सॉस रेडी हो जाए एंड इट्स इजी टू स्प्रेड ऑन द बंस. तो या ऐसे करके आप मिला लो एंड फिर अच्छे से बंस में स्प्रेड करो and just top it with your favorite things. Let's just be creative. I think burgers at home can be a good creative thing, you know, with a family. तो अच्छा लगता है. आप अपने फेवरेट चीज़ें डालो, अनियंस, लेट्यूस, जो भी आपको अच्छा लगे, यू नो, एक्स्ट्रा चीज़, whatever you like. But इस हाउस होल्ड में मेयोनीज़ नहीं चलता है. I don't know when was the last time I had mayonnaise. I just don't like mayonnaise. ऐसा नहीं है healthy option and all of that, but मुझे मेयोनीज़ पसंद ही नहीं है. जब से मुझे पता चला the thing it is made out of, तब से मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. So it's always better to make a burger at home than eating it out, and this is how it looks. Yum. Feedback, it's so good. You guys definitely have to try it. Thank me later. So we're gonna have a burger and green tea and chat before he leaves. उसके बाद ना डिनर का सीन है ना कुछ. मैं सिर्फ सीरीज़ देखूँगी, थोड़ा बहुत वीडियोस एडिटिंग करूँगी एंड फिर सो जाऊँगी. या rest of the food and burger goes in the fridge so that I can relish on it later. Maybe midnight. You never know. If you have watched this video so far, a very thank you to you. Thanks for your support. And I'm gonna see you guys soon. For now, I'm signing off. Bye bye.